Yo, what's up? You're going to learn about batteries today. I just show those few things. Yeah, it's better. Let's go. So we're gonna basically start off with batteries, which is basically starting off with a nickel metal hydride battery, which is which sort of was primarily used in 1990s and stuff, and probably Honda vehicles and stuff as well. But we're gonna basically dig deeper into the batteries that was used previously. This is the nickel cadmium battery. This is a problem child, as they say. Rechargeable batteries. So perhaps these are all rechargeable batteries. So let's see how these work. Okay, let's not get into the chemistry because I really don't know the chemistry. It's too boring. Why am I writing chemistry and stuff? You can believe a lot of power very quickly without voltage dropping significantly. They are incredibly rugged. If you overcharge them to an extent, you can deep discharge without instantly killing the battery. But basically, they perform better in cold weather than many. But they perform better in cold weather than on the introduction. The fatal flaws. The cycle carbon sort of why it is memory effect, the biggest headache. But this is where methyl cadmium gets its bad reputation. If it persistently recharged an area when it is only presently it would be remembered that it is an empty point. What? This is where everyone gets excited. If you consistently recharged, if you consistently recharged nickel cadmium, constantly recharged nickel cadmium battery that is only 50%. To your point, eventually it will lose half of its capacity. Oh. Toxicity cadmium is highly toxic material. The closing of these landfill is an environmental nightmare which led to many factories reducing planning the most customer users. Basically, these are heavy and bulky, so the amount of electricity they actually hold. High electricity density, energy density, high energy density.
Total power density. Low energy density. Measured watt hours per kilogram. The current champion lithium-ion battery, NMC nickel manganese. 220 watt hour per kilograms per kg of weight. Watt hour per kg. Why don't you divest between the watt hour reserved narrated? Next contenders. These batteries are either in pilot or production or already first commercialization aiming to blow lithium the watt out of the water. Solid state batteries. Should must have a video about it. Lithium sulfur. Gravimetric density. How much per weight? How much energy per weight? Importance for planes and drones. Volumetric. How much per size? Importance. Okay. Lithium ion is currently the king of volumetric density. Lithium sulfur is the king of gravimetric. Damn. Lithium ion, lithium sulfur. Theoretically, this is just 400 hour. Incredibly light. Sulfur is incredibly light. So, solid state battery, this is the density. By replacing liquid electrolyte with a solid one, you can use a lithium metal instead of a graphite, which packs more energy into the same space. Why do you want to pack lithium? Okay, whatever. This sulfur is okay, whatever. So, the acid is 30 to 50. Nickel cadmium. Okay, it's better. Those are high density. Full power tools, rugged, Toyota hybrid, Toyota Prius. Okay, coming back to strengths, fatal flaws. Energy density is 40% higher than nickel cadmium, promoted approximately. Okay, talking about this talking about the difference. Toxicity is in memory capture. There is no cycle life, 1000 per cycle.
nickel cadmium, no, nickel metal hydride, nickel metal hydride. No. If you don't fully discharge a nickel cadmium electricity, it starts growing on an anode grow rather. It doesn't actually lose capacity, it just loses the ability to access it quickly. Back to okay, fair enough. I still haven't understood it, but yeah, let's just move on. Now back to the nickel metal hydride, the success that fixed most of the issues, the composition. Trapping toxins from alloys. The metal hydride part is the secret sauce. Engineers replaced the toxic cadmium anode with a specialized hydrogen absorbing alloy, metal hydride. Metal hydride means hydrogen absorbing alloy. Hydrogen absorbing alloy instead of cadmium. Fair enough. With a specialized anode and with this okay, fair. Think of this alloy like a metallic sponge. It doesn't hold. It just doesn't just hold alloy on the surface. It actually tucks. Okay, fair. Common alloys, usually a mix of rare earth elements like lanthanum. Common alloys, usually a mix of rare earth elements like lanthanum, neodymium, combined with nickel, cobalt, and manganese. Where did this come from? Out of nowhere. Actually, it has hydrogen atoms with the okay. You think of it like a okay, fair enough, whatever. I don't know. I don't know how come suddenly talk about common alloys, but let's just move on. Why nickel metal hydride was a game changer. Capacity it offered about like 40% higher energy density than nickel cadmium. Did we talk about it? Yeah. 40% higher density than nickel cadmium. Yeah. The problem with higher density is like energy packed per. What was it talking about? What was it talking about? Energy density. We're talking about something in energy density. Okay, yeah. Is what is moving to target right now. The answer depends on what you're talking about. Energy density, like current champion is this guy. Energy density में nickel manganese cobalt. It's got like weight hour watt hour per kilogram, right? How many watt hours of energy per kilogram is perhaps what's the unit, isn't it? Oh, it's getting us the sources as well. If I that pretty good, pretty good. I don't want to know the sources, but it's fine. Now that I sort of let me just close the door. Right, so it strikes best balance between energy, safety, and cost. It's what allowed it's what allows a Tesla or a MacBook to be wide. Okay, yeah. So current to be thin while lasting for hours. Okay, batteries have always been like a boring subject because it's interesting but also boring to me. I might as well have to watch like some interesting videos on batteries to be able to understand what's going on in on like a very deep level.
But let's just move on. The next conductors emerging like perhaps in 2026, 2027, because these batteries are either in pilot production or early commercial aiming to okay. Solid state batteries, which has got a very high energy density. And these batteries are supposed to be like, because it's like using solid anode, I guess. It's like using a solid, replacing electrolyte with a solid. Yeah, they're using an electrolyte they're replacing the electrolyte with a solid one, so that you can use lithium metal anode instead of like graphite. I don't know how, but let's just move on. Which packs more energy into the safe space. Fair enough. Lithium sulfur is again a new one, which is like sulfur. Has an ability to hold incredibly massive amount of charge. Hold massive amount of charge. Like, damn, it's pretty interesting. It is the holy grail for weight sensitive things like drones and electric planes or whatever, right? So yeah, that's perhaps the thing. So then again, like inside perhaps is gravimetric and volumetric. So engineering is remove these types of density. The two types of density, so let's just think about it. Gravimetric density, watt r plus kg, I guess. I don't know what that is. How much energy per weight? Important for planes. How much energy per weight and volumetric. Volumetric density. Yeah, fair enough. Volumetric density is how much energy per size. Important for slim smartphones. It's for drones and stuff. Whatever. Your video is comparing sodium and lithium given. Your video is comparing given the table above. Do you see why sodium is considered budget alternative rather than? Boy, what was he supposed to be? Oh yeah, fair. It was mentioned there. Yeah, good response. I like that. I like that response. Don't sell yourself short. I mean, yeah, fair. Fuck it. Major, okay, whatever. I think okay, yeah. Let's just a major weakness. Okay, yeah. So is again for environmental safety. No cadmium means easier to recycle and hazardous. Okay, whatever. Voltage compatibility if kept at the same 1.2 volt, 1.2 volt nominal voltage as nickel cadmium could directly replace in existing devices without designing the. Fair enough. I don't know how that works, but fair enough. The major weakness self discharge. If nickel cadmium had acyl heels, it was self discharge. Where in a standard NIMH battery, the chemical reaction happens slowly even when the battery is just sitting on a shelf. Nickel metal hydride, yeah, just sitting on a shelf. You could just charge a set of batteries on for your camera, leave them for 2 weeks, and find them nearly dead when you want to use them. Finally, the envelope revolution around the envelope revolution, ENE loop revolution around 2005. Sanyo introduced LSD NMIS low self discharge. They improved the separator and the alloy to ensure the battery kept 70 charge even after a long year of storage. If you buy a rechargeable, I think it's they're almost certainly contain they're almost certainly any loop revolution. The problem with nickel metal hydride NMIH, right? The problem with what? NIMH is self discharge.
Okay, fair. NMIH versus the future, lithium ion, sodium ion. While NMIH is safe and rugged, it's heavy. Mechanical engineer perspective for designing an EV, weight is your enemy. NMIH is heavy, fair enough. NIMH, fair. Battery and lithium a nickel metal hydride pack for a car at roughly twice as much as the lithium ion pack and the same amount of energy. Since the video is coming, sodium is actually being positioned as a new NIMH in some ways. It's cheaper, safer than lithium, but heavier. It's still not got that kind of energy density, I suppose. Energy density, perhaps we'll talk about weight, right? I think it's just weight. And energy density, we'll be just talking about weight. Let's just listen to what he's trying to say. कि हम नॉर्मल गाड़ी में 12 वोल्ट बैटरी की जगह 48 वोल्ट पे जाएंगे। सबको था क्योंकि मतलब आप हर चीज इलेक्ट्रिकली करना चाहते हो। ये ग्लास भी अब अप डाउन इससे हो रहा था, मोटर से हो रहा था, स्टीयरिंग पंप भी हाइड्रोलिक की जगह मोटर से होने लगा था, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। Steering pump. Steering pump was like hydraulic before. Steering wheel was. भी मोटर से हो रहा था, तो बहुत सारा चीज लोग चाहते थे कि उसे शिफ्ट किया जाए इलेक्ट्रिकली। 12 वोल्ट में एम्प बहुत ज्यादा हो जाता, तो 48 पे जाना चाह रहे थे, वो इसके हिसाब से डिजाइन किया गया था। वही इलॉन मस्क का वो क्लेवर जो आइडिया था कि लिथियम भी उसी टाइम डेवलप हुआ है, यानी कि 1970 में लिथियम का भी डेवलपमेंट हुआ है, और वो भी 90s में ही मार्केट में आया है। लेकिन उसको कोई बड़े लोड के लिए नहीं यूज कर रहा था, इससे बड़े लोड के लिए यूज कर रहे थे। और सोनी कॉर्पोरेशन जो था, पहली बार एक कंपनी बना जो लिथियम आयन को पब्लिक कंज्यूमर के लिए लॉन्च किया, सोनी का करके। हैंडी कैम के लिए उन्हें एक बैटरी चाहिए था, जो और उनको समझ में आता निकल कैडमियम से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए सोनी उतारा। और प्यार से उसके बाद आप समझिए निकल मेटल हाइड्राइड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मतलब अभी भी कंपनी है जैसे कि पैनासोनिक का एनलूप ऑलमोस्ट इसे दोबारा ये कर दिया। और मैं कहूंगा कि आप लोग के घर में खूब सारा रिमोट है, रिचार्जेबल बैटरी पे एक बार खर्चा कीजिए, चलते रहता है। तो N-loop. So you talked about N-loop. So N-loop is basically Panasonic's. Supposed to be Panasonic, right? Okay. Send you Panasonic. Let's see what they are. I mean, company के नाम में क्या है? कुछ तो भाई. N-loop से, yeah, fair enough. वो कर सकता है। इसका भी वही टाइमलाइन रहा, प्रॉब्लम मतलब क्या है? प्रॉब्लम क्या है? 1970s में इसका रिसर्च हो गया। मतलब अब बोले हर चीज 70 में क्यों हुआ है, बात है वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, निपटा एक बार, तो काफी लोग के पास काफी प्रॉस्पेरिटी आई, वो सब लोग गए एजुकेशन में घुसे, तो खूब मेहनत हुआ है बहुत। 1970s के बाद, right? Yeah. So World War II actually, I should probably study World War II as well. I mean, कितना चीजें पढ़ लूंगा. बहुत सारी चीज का डेवलपमेंट हुआ है। अब रहा बात कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं, 2025 में अभी कहाँ हैं? अभी हम लोग उस जगह पे हैं कि इतना बैटरी का प्रोडक्शन हो रहा है कि हम लोग अपर लिमिट पहुंच जा रहे हैं मिनरल सप्लाई का, यानी कि सर मिनरल्स नहीं है। मतलब कि अगर मिनरल का सप्लाई चल रहा था 500 टन पर डे, अब हम लोग बोल रहे हैं 600 टन दीजिए। बस माइंस बोल रहे हैं सर हम उसके हिसाब से बने ही नहीं है, उतना आउटपुट आप जितना मांग रहे हो उतना हमारा प्रोडक्शन में ही नहीं है। The problem is, I don't understand that. I don't see this problem. I mean, like directly, like it's not. I mean, how do I put it? Like it's not. Why am I not aware of this problem like directly? Such a big problem. It's just in concept. Like batteries having shortage. Okay, this guy talking. Let's just ask GPT. I want a perspective of it. Or maybe I just perhaps should let it sink from तो here. मैं क्लियर कर देना, प्लैनेट में कमी नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। मतलब ये ऐसा समझिए कि आप चले जा रहे हो 1800 में, आप बोल रहे हो हमको पेट्रोल दो जितना अभी हम खा रहे हैं, नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल है लेकिन ड्रिलिंग मशीन सब उसके हिसाब से नहीं होते हैं, ऑयल फील्ड्स नहीं डेवलप किए गए हैं, रिफाइनरी नहीं डेवलप किया गया है। बात वही, हम लोग वहां पहुंच गए, मतलब कि शुरू शुरू में कोई लिथियम पे ध्यान नहीं दे रहा था, निकल मेटल पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन एकाएक इतना डिमांड इसका बढ़ गया कि अब सबको है कि सर सप्लाई कम पड़ रहा है। और ये सब बहुत तेज हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब 2010 तक में भी जाइएगा तो कोई उतना ध्यान नहीं देगा, और एकाएक मतलब 10 से 2025 यानी 15 ईयर का गैप में धड़धड़ा के सब लोग कूद गए इसके पीछे, तो समस्या आ गया। शांताबाई पवार 90 साल की है, लोग इस उम्र में चल भी नहीं पाते, और अम्मा
अब रहा बात तो लिथियम में समझते हैं। तो लिथियम समझिए कि इसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के टाइप होते हैं। ये एक सबसे कॉमन चीज आपको समझना पड़ेगा। आप बोलते हैं लिथियम बैटरी, उसका कोई मतलब नहीं है, ये अम्ब्रेला टर्म है। जैसे बोलते हैं ना Oh, like that. Lithium battery is an umbrella term. We could talk about something else as well. Production के बारे में बात कर नहीं रहा है, था? उतना आउटपुट आप जितना मांग रहे हो उतना हमारा प्रोडक्शन में ही नहीं है। Yeah, it's nothing. It's just like normal stuff. Nothing data driven. Nothing perhaps something data type shit. You know what I mean? अब रहा बात तो लिथियम में समझते हैं। तो लिथियम समझिए कि इसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के टाइप होते हैं। ये एक सबसे कॉमन चीज आपको समझना पड़ेगा। आप बोलते हैं लिथियम बैटरी, उसका कोई मतलब नहीं है, ये अम्ब्रेला टर्म है। जैसे बोलते हैं ना Hmm. कैंसर है, उसका क्या मतलब है भाई? कुछ नहीं। आप बताओ ना, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, स्किन कैंसर है, क्या है? वैसे ही Yeah, cancer. Yeah. लिथियम बैटरी बोलते नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। कौन सा लिथियम है? जैसे आपका लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड है, लिथियम निकल कोबाल्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड है, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड है। तो ऐसे तो तीन चार ठो बड़े बड़े पॉपुलर हैं आपका। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जैसे ओला का शक्ति के बारे में हम देख रहे थे, तो उसमें हम इसीलिए उसको इग्नोर कर दिए, क्योंकि उसमें देखे कि निकल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी है, इसमें आग लग सकता है। तो इसीलिए ये उसे एनएमसी बैटरी कहता है। कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, मतलब कितना किलो वाट आप एक टंकी में डाल सकते हो, बहुत अच्छा होता किलोवाट एक टंकी मतलब किलोवाट पर आर, किलोवाट पर वेट, किलोवाट पर केजी, करेक्ट, किलोवाट पर केजी। है। लेकिन वही है कि अगर पंचर हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हर्षई दीर्घई हो गया, वो बूम कर सकता है। और ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जब आप इस तरह की बैटरी के बारे में बात करें तो लिथियम महंगा है। लिथियम उतना महंगा नहीं है। लिथियम से ज़्यादा आराम से उसमें दूसरे मेटल्स जा सकते हैं जो ज़्यादा महंगे हैं, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। और बाय द वे, इसमें से कई सारे मेटल इतना ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं, प्रोडक्शन था लेकिन बहुत छोटा सा प्रोडक्ट, मतलब निकल कितना खपत होता था, अब घट के जा रहा है। कोबाल्ट बहुत थोड़ा सा खपत, अब बहुत खा रहे हैं। तो पेनल्टी ये हो गया है कि आज के टाइम में ये सारे मिनरल्स हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट मिनरल से लाने पड़ रहे हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के उस जगह से लाना पड़ रहा है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो समझना बहुत जरूरी है, सप्लाई चेन भी अनस्टेबल है। Okay, where is it produced? Let's start with that. Right. So now is talking about lithium being not that big of a. Firstly, okay, he's not directly talking about that. He's probably talking about lithium being in extreme shortage, or perhaps a better way to look at this is a sudden surge in demand during from the periods in the 90s.
The assessment is pardon, but in India, you appreciate the basic layers of why it's happening. Shortage isn't about how much money is in the ground, it's about the geographic concentration. Yeah, that's what I was talking about. Assessment, assessing the assessment, the nuance. The sudden surge wasn't just more phones. It was electric vehicle. It was the electric vehicle pivot, the lithium paradox. Lithium isn't actually there. The 25th more. Damn, what? Shortage is the shortage is a bottleneck in process. That's interesting. Lithium is actually most abundant. The shortage is a bottleneck of in process. It takes 5 to 10 years to build a high purity refinery, but only 2 years to build a battery. But a gigafactory. We build batteries. We build the factories faster than the mines. What? What? The lithium paradox. Lithium is actually rare. The shortage is a bottleneck in processing. It takes 5 to 10 years to build a high purity refinery, but only 2 years to build a battery gigafactory. To build factories faster than the mines. Fair. So the blood minerals, cobalt, in these are real headaches, while lithium is the salt in the battery soup. Cobalt are the meat. The cathode are the meat. Cobalt provides thermal stability. Nickel, we are trying to work in whatever. Ethically, we are trying to phase out cobalt because it's expensive, ethically dirty, but doing so requires more nickel. So we're also reading this. So where are the mine? Where are the mine? Where are they mined? The world's battery supply is dangerously concentrated in just a few spots. Lithium, Australia, hard rock, Birans. Australia mines it, but China refines it. The difference lithium में cost or time is in making the mine 7 to 10 years. Battery is just 2 years. What's the difference? What's the difference between what is the difference between mined and refined? This is the industrial logic that defines the battery world. As a mechanical engineer, you'll see this as a battle between raw material power versus processing infrastructure. The dig and ship model. Australia is incredible at mining. They have the greatest Greenbushes mine, which is basically the high grade capital of the lithium world. But until very recently, they did have the refineries. The Superdium gap. Australia mines Superdium, a hard rock ore. We use Australia, it's about 6% lithium. We are essentially shipping 94% useless rock. The China advantage, China spent last 20 years building conversion plants. These are massive high temperature chemical facilities that take that. What the fuck? Why China? Why can't Australia do it? Let's see. So spodumene and spodumene, a hard rock. When it leaves Australia, it's about 6% lithium. You're essentially shipping 94% of the useless rock.
China spent last 20 years building conversion plants. These are massive high temperature chemical facilities that take the rest of the 60% turn into 99.5%. Damn, really? Lithium hydroxide, battery grade. Why China? Chemical infrastructure. China has specialized autoclaves, acid leaching plants, and roasting kilns ready to go. Building one of these in Australia or US takes 5 to 10 years due to environmental permits and high construction costs. Oh, so they're leveraging on the environmental. We'll see. Building one of these, okay, fair. Energy and costs. Refining lithium is extremely energy intensity. You have to roast the rock at 1000 degrees Celsius. Historically, China has lower energy and labor costs, made it the only place where the math worked for battery companies. Has China's lower energy and labor costs. Historically, this is 100% true. Refining lithium is a dirty chemical process. It creates a lot of toxic waste, uses massive amount of water. China's environmental standards of chemical plants are much lower than in Australia or US. They could build plants faster and cheaper because they didn't have to spend as much space on extreme high-tech covers. Still, China actually tightening rules, not necessarily because they've gone green purely for planet, but because they want to dominate the global market. What? If the batteries are dirty, Europe will hit them with carbon border taxes. They are now cleaning up their act to ensure their batteries remain exportable. Damn, this is pretty good. Exactly, it's true that we fine, okay. I don't know, high-tech scrubbers.
the low energy mastery. You understood why labor is cheap, but the energy part is where the real energy happen. How can a country that imports oil have cheaper energy for factories? The coal paradox. China is the world's largest coal producer. Even in 2026, while they are leading in renewable, they use cheap domestic coal to provide baseload power for the industrial zones. They basically build their refineries right next to massive coal plants. Where what are the two things? Cheap labor. Wait. The coal paradox. How can it be a paradox? Okay, whatever. China is the world's largest coal producer. Even 2026, while they are leading in renewable energy, they use to provide baseload power for the industrial zones. They basically build the refineries and take massively. Fair enough. The renewable scale at this as of this year, China's installed solar wind capacity has actually overtaken coal because they manufacture solar panels and wind turbines themselves. They have driven the cost of new energy to almost zero in some regions. Damn. State subsidies. The Chinese government treats electricity for strategic industries like differently. There is not like market decide the price. They keep industrial electricity artificially low to ensure the factories that can cut out and outcompete the rest of the world. Damn. Subsidies for subsidies for the industries. The processing. We got good air. Sorry. The processing ecosystem. This is part that usually blows people's mind. Even if Australia built a refinery today, it would still struggle to compete with the world because of the vertical integration. The French owned by the same company that makes the cathodes, which is right next to the company that makes cellars, which makes boiii near a car factory. Mechanically, imagine you're building a car, the current global system, you buy it, the current global system, you buy the engine in Germany, the seats in Mexico, and in China. The whole car is built in one time. The logistics cost is essentially zero. They got everything in house. This leads us back to the sodium ion and lithium ion debate in a video. Let's just get back to the. Let's just see where was I doing? What was I doing? Yeah, so I was wondering about what actually happens in the. Okay, yeah, I was here. Energy cost. Refining lithium is energy needed in the ecosystem. Fair enough. Geopolitical planning. The geopolitical. As of right now, we're trying to understand. Australia fighting back. They've started building their own refineries, like the one in Kiviana. They want to stop shipping rock and start shipping value-added chemicals. That is, China currently refines 67% of the world's lithium. If they decide to stop exporting refined lithium, like they recently. What? They did for graphite?
open pit blasting in Western Australia, concentration crushing the rock using froth flotation to get the 60% spodium, loading onto a bulk carrier to Chinese ports, change its crystal structure from alpha spodium to beta spodium, denseless, useless to reactive, acid leaching. This rock is mixed with sulfuric acid to create lithium sulfate. Purification, they use soda ash to precipitate the lithium carbonate or hydroxide. This is exactly why sodium ion is a threat to the system. Doesn't need this insane international rock shipping cycle because you can get it from South anywhere. Does your video mention about the environmental cost of the shipping, or talk about how India is trying to fit into this map? Let's just see. दाम भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। और उन सबको तीनों को अगर देखिए, लिथियम देखिए, कोबाल्ट देखिए, निकल देखिए, तब लगे भैया लिथियम तो फिक्स्ड है, मतलब लिथियम स्टेबल है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बना देता है। और ये इंजीनियर्स लोग को पता चल गया था कि अगर हम लोग इस तरह का ऊटपटांग केमिस्ट्री पे चलेंगे, जैसे कि सोनी भी उतारा था तो कोबाल्ट पे ही उतारा था, तो उनको भी पता चल गया था कि सर लॉन्ग टर्म ये नहीं चलेगा। और खासतौर पे जब आप गाड़ी या घर ये सब चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये रहा कि एक केमिस्ट लोग बैठे और ये बनाया लिथियम आयरन फॉस्फेट, LFP जिसको कहते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट। और ये बनाया गया था सस्ता करने के लिए। चाइना ग्रेफाइट रुक गया था। और इसमें वही है कि कॉस्टली आइटम हटा दिया, आपका कोबाल्ट, निकल, ये सब हटा दिया। उसमें सिंपल है, लिथियम है, आयरन है, फॉस्फेट आपका सल्फर यूज हो सकता है, या एक दो और मटेरियल्स भी हैं जो सस्ते में निपटा देता है, तो काफी सस्ता है। अब रहा बात कि आज के टाइम में, यानी कि अभी 2025 में आप मार्केट में पैसा डालते हैं, आपको क्या मिल सकता है, उसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। यानी कि बहुत सारे चीज होता है आपका बैटरी में। सबसे पहला चीज होता है परफॉर्मेंस, यानी कि कितना उम्फ दे पाता है। फिर हो गया आपका लाइफ स्पैन, कितना मतलब साइकिल बर्दाश्त कर पाता है। कॉस्ट आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है। फिर हो गया स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कितना किलोवाट आवर उसके टंकी में अटता है। स्पेसिफिक पावर, कितना किलोवाट का वो झटका सेफली बर्दाश्त कर पा सकता है। और सेफ्टी, मतलब कि पंचर उंचर होने पे क्या होगा। तो जैसे परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ये सब के मामले में सबसे बेस्ट आता है आपका लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड। इसे हम लोग सैटेलाइट में भी रख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइक भाई आप इसको ड्रिल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइक आई डू नॉट केयर, आप इससे करंट निकालिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें करंट डालिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर कोई क्यों नहीं यूज करता? पहली बात, महंगे चीज है उसमें। दूसरा, उसका कैपेसिटी कम होता है, यानी कि किलोवाट आवर बहुत कम है। किलोवाट बहुत हाई है, किलोवाट आवर बहुत कम होता है, तो आपका बैटरी बहुत बड़ा हो जाएगा। बेनिफिट, चलता रहेगा।
मतलब कि अभी आप लिथियम आयरन फॉस्फेट लेते हैं, उसमें बैटरी का वारंटी आता है आपका 15 साल का मैक्सिमम। ये अगर आप लेने जाएंगे सर, वारंटी मत पूछो, मत पूछो, 30 साल से पहले तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो वो यूज करते हैं। वहीं पे अगर आप लिथियम आयरन फॉस्फेट आते हैं, ये बैलेंस है, मतलब कि आग लगने वाले बैटरी से और लिथियम आयरन टाइटेनेट से बीच में आता है। ये सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, यानी कि आपको कितना किलोवाट का झटका दे सकता है, बहुत दे सकता है, कितना किलोवाट आवर कैरी कर सकता है, अच्छा खासा कर सकता है। बेस्ट नहीं है लेकिन इतना करता है कि यूजलेस नहीं हो जाता है, और सेफ भी है, यानी कि आग उगलने पे गैस निकलेंगे, बूम नहीं करेगा। तो ये काफी चीप, सेफ और बहुत हाई पावर होता है, यानी कि एक्चुअली इसका पावर रेटिंग आपके एनएमसी सेल से ज्यादा रहता है। यानी कि अगर आप एम्प का झटका देना चाहते हैं, एनएमसी खतरनाक हो जाएगा, इसलिए सर ज्यादा आप ले रहे हो। और लिथियम आयरन फॉस्फेट बोले थारा भाई संभाल लेगा, झटका जो है थारा भाई संभाल लेगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं आज के टाइम में, इसीलिए सारी आप आराम से फॉलो कीजिए कि सब लोग स्टार्ट किए थे। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत पहले आए थे, इलॉन मस्क के सिवा दूसरे लोग भी गाड़ी बनाए थे, जैसे ईवो करके एक ठो गाड़ी आया था, उसमें भी लिथियम आयरन फॉस्फेट था। महिंद्रा का भी था, उसमें भी लिथियम आयरन फॉस्फेट था। सब लोग आयरन फॉस्फेट पर चल रहे थे। वो इलॉन दिखा दिया कि लैपटॉप का बैटरी डाल दिए जिसमें कोबाल्ट है, आग लगने का खतरा है, उसको इसीलिए कोई डाल नहीं रहा था। वो डाल के परफॉर्मेंस हाई दिखा दिए तो सब लोग अब वो कूदा, फिर आग उग लगा, फिर वापस आ गए लिथियम आयरन फॉस्फेट। मतलब लिथियम आयरन से गए थे, फिर वापस वहीं आ गए। लेकिन हाँ, इसका पुअर कैपेसिटी का मतलब पड़ता है कि मतलब आप अगर ये एनएमसी से बनाते हैं तो ओला के छोटे से बैटरी में कितना दूरी जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर आएगा। लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा लिथियम का इतने सारे केमिस्ट्री डेवलप हो गए हैं। और मैं क्लियर कर रहा हूँ, जब आप लिथियम आयरन फॉस्फेट बोल रहे हैं, उसके अंदर भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे, यानी कि जो स्पेशल स्पाइस है वो हर कंपनी अलग करेगा। आपको सैमसंग बना के देगा, अलग देगा, एलजी बना के देगा, अलग देगा। तो स्पेशल स्पाइस हो गया। दूसरा ज्योमेट्री, आप आराम से सेम केमिस्ट्री ले सकते हैं और उसको ऐसे रैप कर सकते हैं, जो उसका जेली रोल बनता है आप बना सकते हैं, सर ये पावर देगा। और वही जेली रोल का जो मतलब केमिस्ट्री है, वही स्पाइस लेके आप ऐसा कर सकते हो, नहीं सर ये बहुत कैपेसिटी है। मतलब आप एल का 18650 लीजिए, आपको जिसमें 3500 मिली एम पावर का किलोवाट। मिल जाएगा। और वहीं एल का ही लीजिए जो सिर्फ 2600 दे रहा है। बोले फिर फायदा क्या है, सब लोग 35 क्यों नहीं रहा? 35 लो एम्प झटका दे सकता है, यानी कि 1 से 2 एम्प का झटका ही बर्दाश्त करेगा। यानी कि अगर आप टॉर्च उर्च के लिए चाहते हैं बल्ले बल्ले, जहां पे लोड कम है वहां बल्ले बल्ले, जहां कैपेसिटी चाहिए बल्ले बल्ले, वहीं पे जो आपका 2600 वाला है वो ड्रिल में डालिए, ताकि वो एम्प जो झटका मारेगा वो संभाल लेगा। तो समझना बहुत जरूरी है। ये एक रफ आइडिया है, मतलब कि लिथियम में कौन सा, आयरन फॉस्फेट में कौन सा ऑप्टिमाइज्ड है, जो पावर के लिए या ऑप्टिमाइज्ड है जो कैपेसिटी के लिए। और ये ज्योमेट्री से ही हो जाता है। और उसके बाद स्पेशल सॉस लोग डालते हैं ताकि और रिफाइन हो सके। लेकिन रिसाइकलिंग अभी सॉर्टेड नहीं है, यानी कि लेड एसिड बैटरी सॉर्टेड है। हम लोग इतना टाइम से किए, समझ में आ गया कि लेड बहुत पॉइजनस होता है, तो लेड को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। लिथियम अभी हम लोग वहां नहीं पहुंचे हैं, मतलब वो उतना पका नहीं है। और बैटरी भी बेचारा ताजा है, कहाँ लेड एसिड 1800 से हम लोग कर रहे थे। ऑब्वियसली ये महाशय अभी बहुत नए हैं, तो अभी पूरा सिस्टम नहीं सॉर्ट हुआ कि कैसे इसे रिसाइकिल करें। Fair enough. Just 90 minutes from Bangalore, nestled within the Sanctity Fermi community in Shulegiri, lies Winterfell, a masterpiece of camouflaged design, where architecture bows to nature. Here, the home doesn't rise above the land, it grows from it. Mud walls breathe warmth, while curved glass and open decks invite the horizon inside. A serene valley transforms into twin pools, one for laughter, one for calm reflection. It's beautiful. Every wall, every stone, every view sings in harmony with the land. Winterfell, an idyllic retreat for those who seek to live not apart from nature, but as part of it. Ah, तो ये हो गया लिथियम बैटरी के बारे में। अब बात करते हैं कि सोडियम हर मामले में सस्ता better. होगा लिथियम से। और लिथियम में ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, लिथियम से आधा से ज्यादा लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि लिथियम का दाम ज्यादा है। इससे प्रॉब्लम कि सप्लाई चेन स्टेबल नहीं है। यानी कि आप कल बोलते हो सर हम एक फैक्ट्री खोल देंगे, आए हुए सर बल्ले बल्ले सर पैसा हम ले लेंगे सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। लिथियम अरे नहीं सर, पहले से ही प्री बुक्ड है, जितने माइन से पहले से ही प्री बुक्ड है कि सर ये हमारा यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है सर, ऑस्ट्रेलिया से आने वाला यहाँ जा रहा है, चीले से आने वाला यहाँ जा रहा है, चाइना से आने वाला इधर जा रहा है। मतलब सप्लाई चेन जो है बहुत ही
कमजोर है, मतलब क्योंकि बनाया नहीं गया था। मतलब 1990 तक में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था लिथियम पे। 2010 में लोग थोड़ा सा देखने लगे, दिस मे बी इंटरेस्टिंग, और 2015 में ओके दिस विल बी इंटरेस्टिंग, अभी आग लगा दी है। तो ये समझना बहुत जरूरी। और रहा बात कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स भी पहुंच जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो Na जो है वो वापस आ गया मार्केट में। बोलेंगे एक मिनट, पहले था Na? हाँ, सोडियम सेल जो है वो पहले भी बनाया गया था। टाइमलाइन इसका भी वही है 1970s। समझना बहुत जरूरी, क्या हुआ 1970s में सब चीज। तो 1970s में हुआ और लोग छोड़ दिए इसको। क्यों छोड़ दिया? पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट, जैसे आयरन मैन का 2 में आप देखेंगे ना कि आई हैव ट्राइड एवरी एलिमेंट इन एवरी कॉम्बिनेशन, वो सब लोग 1970 में वही कर रहे थे। सब ट्राई कर लिया, सबको पता चल गया लिथियम बेटर है, ठीक है, तो सोडियम पे काहे मेहनत करेंगे। तो मतलब बना लिए, पेटेंट वुटेंट कर लिए, बस छोड़ दिए उसका, ठीक है सर सब लोग लिथियम में कूदेंगे, बस हमने बना लिया, सॉर्ट कर लिया, ये भी कर सकते हो। और 2021 में एक कंपनी बोले कि हम इस पर उतारते हैं, जिसका नाम है CATL कैटल। ये चाइना का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चर, वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चर है। ये बोला कि हम सोडियम को वापस उतारते हैं, मतलब लैब में था, स्मॉल स्केल पे था, लेकिन ये वापस लाए। और इनका USP या टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए, सोडियम लेयर्ड ऑक्साइड ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट यूज हो रहा है। अब बोलेंगे एक मिनट, मैग्नीज कोबाल्ट इसमें क्यों जा रहा है? बात है इसको ट्रांजिशन मेटल चाहिए तो वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रहा बात की तो इसका दाम कम क्यों है? लिथियम से ये इतना कम है और सप्लाई इतना स्टेबल है कि दाम कस्टमर को कुछ परसेंट कम आता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं पीरियोडिक टेबल नहीं बदलता है। अगर आपको 1970s में पता चला था कि सोडियम में कम पावर है, तो अभी भी कम ही पावर होगा। कितना कम पावर है? आपको 5 से 20% कम मिलेगा कंपेयर टू लिथियम आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट ही बोल देगा सर आपसे ना हुए। आयरन फॉस्फेट आपसे ऊपर चल रहा है लिथियम का, मतलब जो लिथियम का कमजोर कड़ी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, वो बोल रहा है सर आप तो हमसे भी कमजोर हो। वो दिक्कत है। Lithium का और कमजोर इसमें कड़ी. एक फायदा बहुत होता है, मतलब कि पावर कम That's है। actually a nice way to look at it. Like, I mean, okay, let's just fucking start. Let's go. Lithium, as I have just discovered, is an umbrella term, and that it's useless. It's when used alone to address the battery. Instead, we have to specify the type and stuff.
Let's see how this goes. This is a perfect way to look at it. I mean, I just found. And then the cathode, positive side of the which defines its personality. It provides core energy that's too unstable. Let's look at the lithium joint family, right? Lithium cobalt oxide, the elder patriarch, vibe. Elder patriarch means perhaps like a this is the first successful member of the family commercialized by Sony. Okay, fair enough. Let's go. I think I like it. I like it already. You know what I mean?
Oh god, I have to put this stream as private. I can't. Oh god. Shit, man. I didn't know this was supposed to happen. सेफ है, मतलब कि आग नहीं पकड़ेगा, वो सेफ है। I have to fuck it in the stream now.